वेलकम बैक गाइस। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 काइनेमैटिक्स का। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, दिस इज पेपर 2, माय बैड। इधर भी पेपर 1 ही लिखा हुआ था मैंने। लेट मी सी। सॉरी, इट वाज पेपर 2। अच्छा, पेपर 2, क्वेश्चन 2। द पावर सप्लाई टू द मोटर इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट अ स्टेडी रेट। एक स्टेडी रेट पे पावर सप्लाई स्विच ऑन एंड ऑफ हो रही है हर एक टाइम इंटरवल के बाद। फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के बाद हो रही है, फॉर एग्जांपल। दैट्स कॉल्ड स्टेडी रेट। तो figure 5.2 shows how the speed of the toy car varies with time as a result of power supply being turned on and off। अच्छा, बेसिकली इधर क्या हो रहा है? पावर सप्लाई ऑन होती है, गाड़ी स्पीड अप होती है, फिर एक टाइम पे जाके टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाती है। उसके बाद जब मोटर ऑफ होती है, आई assume, तब गाड़ी इट डिसेलरेट्स, और उसके बाद पहले एक्सेलरेट, कांस्टेंट वेलोसिटी, डिसेलरेट, उसके बाद फिर से एक्सेलरेट, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर डिसेलरेट। सो आगे डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। अच्छा, जब जब ना गाड़ी ना ऑन होती है ना, इट टर्न्स ऑन, देन द कार स्टार्ट्स टू speed up and eventually it reaches a terminal velocity before it, it turns off, the motor turns off again, right? That is what we're seeing here, and that is happening constantly. So the car speeds up and slows down when turned on and off, reaches a steady speed. Terminal speed matlab constant speed. Slows down but never to rest. Yeah, I forgot to mention this. The car never reaches rest. It is always, the speed always has some value. ठीक है ना? So yeah, आगे, sorry. Question part 2. The voltage supplied to the motor is switched on for a longer period of time and off off for a longer period of time at a steady rate. अच्छा, अगेन यही हो गया है, लेकिन what will happen is the motor तो चेंज नहीं हुई ना, motor will stay the same. So the thing that will change is the amount। पहले मेरे ख्याल से गाड़ी डिसेलरेट होते होते रुक जाएगी, और दूसरा, the car will stay at a terminal velocity, terminal speed for a longer amount of time, because इस पॉइंट के बाद तो गाड़ी टर्मिनल स्पीड पे पहुंच जाती है, तो इट विल रीच टर्मिनल स्पीड फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड द कार विल रीच लोअर स्पीड्स। लेट्स चेक। सेम कांस्टेंट स्पीड drops to a lower speed when comes to rest। ठीक है। सो या, लेट्स डू दिस। ओके, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं यहाँ रख दूं, just so you guys have a easier time understanding। ओके, पार्ट 2, आगे चलते हैं आप। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 3। Figure 1 7.1 shows a helicopter. It can hover and travel through the air. A student flies the helicopter on a journey to A to B, then B to C, then C to D at a constant height. Constant height. Figure 7.2 is a scale drawing of the path of the helicopter. Scale drawing है। Determine the total distance traveled by the helicopter। Distance क्या होगा? Distance जो भी वो हेलीकॉप्टर जगह पे रहा है और जो भी जगह पे आगे जा रहा है, वो सारी जगह, मतलब ए टू बी, उसके बाद बी टू सी, और फिर सी टू डी। ये टोटल ए जो डिस्टेंस है, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस। सो 10 प्लस 35 प्लस 40, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना? दे आर नॉट आस्किंग फॉर डिस्प्लेसमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस 85 meters। So that is the total distance। अच्छा, the helicopter makes the journey in 40 seconds। Calculate the average speed
ड्यूरिंग द जर्नी। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 85। टोटल टाइम क्या है? 40 सेकेंड्स। दिस विल गिव अस 2.125 मीटर्स पर सेकेंड। देख लेते हैं, ये वहां भी सेम ही है। 2.125 meters per second। अच्छा, 2.1 लिखा हुआ है, they rounded it off। So 2.125 meters per second। ये यहाँ लिख देते हैं। हाय। ओके, क्वेश्चन B1। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, the distance we took was all the jagas where the helicopter was, but the displacement will be the shortest distance between two particular places। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखें आप, दिस इज अ रोड, ठीक है ना? इस रोड का डिस्टेंस है, कर्व पैथ जो है, इट विल बी 100 मीटर्स। और जो स्ट्रेट पैथ है, दैट इज 75 मीटर्स। सो जो स्ट्रेट पाथ है ना, 75 मीटर्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द कर्व पैथ इज द डिस्टेंस। ठीक है ना? सो डिस्प्लेसमेंट इज, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये देख लेते हैं हम इसका आंसर। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट per unit time। Displacement involves direction or is a vector? Is a very simple question. It is a vector। वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि what displacement is, just so you guys know। Part 2, determine the scale used to construct figure 7.2 and complete the sentence। 1 centimeter on the diagram represents like dash। अच्छा, एक्चुअल मेजरमेंट जो आपने लेनी है ना, वो अपने रूलर से लेनी है, ठीक है ना? आपने अपने रूलर से खुद लेनी है, जो एक्चुअल मेजरमेंट जो है। सो अगर आप इसको मेजर करोगे, इट इज नॉट टू स्केल एंड इट इज नॉट 10 मीटर्स। इट विल बी समवेयर अराउंड इन द सेंटीमीटर्स की रेंज। कुछ सेंटीमीटर्स होगा, ठीक है ना? सो वी हैव टू फिगर दैट आउट। लेकिन बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव अ स्केल एट दिस मोमेंट। सो या, लेट्स सी। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स, अच्छा, 1 सेंटीमीटर इज 5 मीटर्स। ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर इज 5 मीटर्स। तो वील जस्ट राइट दैट। अच्छा, part 3। यूजिंग फिगर 7.2 डिटर्मिन द साइज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट ए। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है, एंड whatever it is in centimeters, multiply that by 5। So in this case, it is 9.2 centimeters. If we multiply 9.2 into 5, we'll get 46। So it is 46 meters। वर्किंग भी लिख लेते हैं, which is 9.2 x 5। अच्छा, 4, determine the angle between north and the direction of the displacement of point D to point A। ये आपने खुद ही निकालना होगा। अगेन, you have to figure this out yourself। You have to calculate that yourself using a compass, and unfortunately as of now I don't have a compass on OneNote, so I'll try to get another app, I guess। So this is the answer, just tell you that। अच्छा, state what is meant by velocity। velocity is the velocity क्या होता है?
velocity is displacement divided by time. ठीक है ना? Velocity is equals to displacement divided by time. Change in displacement divided by time, average velocity. So yeah. Okay. Five, six. Okay. Another helicopter flies directly from point A to point D in 40 seconds. Explain why the magnitude of velocity of the toy helicopter is smaller than that of A. अच्छा, the reason being कि जो पहले वाला हेलीकॉप्टर था ना, it traveled almost 85 meters. जो दूसरे वाला हेलीकॉप्टर था, it only traveled the it only traveled the displacement. So इसकी अगर हम एवरेज स्पीड निकालें ना, एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 85 divided by time which was taken was 40 centimeters. This will be the average speed, but the average displacement will be 46, which is a straight path. 46 divided by 40. Average the velocity will be 1.15. So that is the right answer. ये आपको मैंने बताया है, इट्स जस्ट मैंने उर्दू में आपको बताया है, जस्ट सो यू अंडरस्टैंड. इंग्लिश में तो रट्टे लग ही जाते हैं, बट conceptualize करवाना is more important than for you to know the rata answers. So having said that, आगे see, when the toy helicopter hovers at D, its motor fails. इसकी मोटर फेल हो जाती है. It reaches terminal velocity as it falls. Terminal velocity मतलब, बल्कि मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा. Explain in terms of forces acceleration what happens to the helicopter as the helicopter falls and reaches terminal velocity. अच्छा, तो if you see, this is the helicopter, just imagine it is falling. Initially इसका weight बहुत ज्यादा होगा और इसकी एयर रेजिस्टेंस ना के बराबर होगी, बट इवेंचुअली जैसे जैसे it will fall and fall, this as the speed increases the air resistance will start to become equal to the weight, and at one time जो air resistance होगा वो weight के equal हो जाएगा and there will be no longer a resultant force. ठीक है ना? There will no longer be a resultant force. A resultant force can only be caused when the forces are imbalanced. So yeah, that is the explanation. Answer is air resistance and weight gravitational force mentioned. As speed increases, air resistance increases, just like I told you. Resultant net force decreases and acceleration decreases. जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं, resultant force is decreased, and as the resultant force is decreased, in contrast, the acceleration is decreased as well because acceleration is caused by the resultant forces. Eventually, air resistance is equal to the weight, as I told you. Terminal velocity, acceleration becomes zero. Sweet. Okay. I'm just gonna copy this. Okay. Let's place them here. Okay, this is the answer. So thank you for watching. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.